Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. This is Akashvani. Good evening and welcome to this Wednesday edition of Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. I'm Gaurang Dhawanlal and with me is my co-anchor in Hindi, Nikhil Shukla. नमस्कार। मार्केट मंत्र के ताजा अंक में आप सभी का स्वागत है, जहां हम आर्थिक, व्यापारिक और शेयर बाजार की खबरें आपके लिए लेकर आए हैं और हम उन पर चर्चा भी करेंगे। और सबसे पहले हेडलाइंस के साथ में है गौरा। Thank you, Nikhil. A quick look at the headlines. Key domestic indices end on a strong note. Sensex finishes above 63,000 points. Nifty crosses 18,700 level. Cabinet approves increased MSPs for Kharif crops. And rupee closes at 82 rupees and 54 paise against the US dollar. घरेलू शेयर बाजार मजबूती के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 63,000 अंक से ऊपर और निफ्टी 18,700 के स्तर को पार कर गया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने खरीफ फसल के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि की घोषणा की और डॉलर के मुकाबले रुपया आज 82 रुपए 54 पैसे पर बंद हुआ। और तमाम खबरों पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं बाजार विशेषज्ञ अविनाश गोरक्षकत। अविनाश जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। गुड इवनिंग। आज की सबसे पहली खबर पर नजर डालते हैं तो देश के प्रमुख घरेलू शेयर बाजार आज मजबूती के साथ बंद हुए। बंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स 63,000 के स्तर को पार कर गया। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी आज पहली बार इस वर्ष में 18,700 अंक के स्तर से ऊपर चला गया। दोनों सूचकांकों में बढ़त वैश्विक शेयर बाजारों से प्राप्त हुए मिले जुले संकेतों के बीच आई है। बंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स 350 अंक यानी कि 0.56% ऊपर चढ़कर 63,143 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 127 अंक यानी कि 0.7% की बढ़त के साथ 18,726 पर पहुंच गया। विस्तारित बाजार की हम बात करें तो मिड कैप सूचकांक और स्मॉल कैप सूचकांक में 1.1% की तेजी दर्ज की गई। A look at the detailed stocks. Key domestic indices ended today on a strong note. The Sensex at the Bombay Stock Exchange finished above the 63,000 mark. The Nifty at the National Stock Exchange crossed the 18,700 level for the first time this year. Both indices rose amid mixed cues from global share markets. The Sensex rose 350 points or 0.56% to finish at 63,143. The Nifty also appreciated 127 points or 0.7% to end at 18,726. In the broader market at the BSE, the mid-cap and the small-cap indices both accelerated around 1.1% each. In the Sensex index, which is a pack of 30 companies, shares of 25 firms appreciated while 5 declined. Nestle India was the top gainer as it climbed 3%, followed by Tata Steel, which was 2.3% up. Tata Motors rose 2.2%. On the other hand, Kotak Bank declined 1.15%, Bajaj Finance fell 0.5% and Mahindra & Mahindra slipped 0.35%. In sectoral indices at the BSE, all sectors logged gains. Telecom sector rose 3% and utilities sector was up by 1.95%. Capital goods and metal both surged 1.7% each. Realty sector accelerated 1.5%. The overall market breadth was positive as shares of 2,295 companies rose while 1,267 companies declined. A total of 136 shares remained unchanged. Avinashi, the market showing strength, marginally moving down over a day or so. I mean, we've been seeing this for the past, couple of weeks. What do you think? Are these economic factors? Is it primarily global? Or are we as a market gaining some inherent resilience? Yeah, I think my sense is, the markets are in a kind of a very buoyant kind of a mood as of now, largely because, two major events. One is the domestic RBI policy, where the market is expecting a rate pause, and I think that is definitely good news because previously also the RBI governor had done a rate pause, and that had actually been liked by the market significantly.
What it means is that most of the interest sensitive sectors, like automotive, auto components, real estate, capital goods are definitely going to find the going easier if interest rates don't go up. That actually also signals the fact that inflation also is more or less coming in control. But the bigger event which is going to play out in the coming week is the US Fed policy decision. I think here also markets are factoring in the fact that possibly, Mr. Powell, the Fed governor, is unlikely to raise interest rates now. I think at least till the time inflation numbers, don't, remain volatile. So I think both these events, if we anticipate no rate hikes, I think that is probably one of the reasons why the markets are looking forward to a better traction going forward. So all said and done, in the very near term, at least the coming week, I would believe that if these two factors play out as per what the market understanding is, then I think you could see a further kind of re-rating or some sort of further buying in the market. In fact, today, just to put it in perspective, today the FIs have purchased almost 1,300 crores of shares, and even the domestic institutions have been net buyers. So I think a lot of liquidity is coming in the markets ahead of this macro news, which is going to be very important. Especially, not only from the rate cost point of view, but even from the kind of commentary we hear both from the RBI governor as well as from the US Fed governor. So I think net is going to be a market, where any decline is going to be used as an opportunity to buy. Of course, this will be relatable only to good quality companies, from the large cap and the mid cap space. You spoke of a lot of liquidity coming into the market, Avinashji. What about the retail investor, the small investor? How does one look at it from that perspective? Is it a happy time? Is it to actually invest a lot, or is caution to be taken? Retail investors need to be very selective. I think the markets are going up in a tearing hurry. So I think definitely, times are definitely good. We could see better earnings numbers, the market sentiment getting better, hopefully if liquidity continues to come in. But I think for a retail investor, I think it is essential that, he sticks to a long-term investment strategy, either opting for mutual funds or looking at large cap companies, because in the mid categories, the volatility is also very high. So my sense is, yes, it's a good time for investors who want to actually allocate funds for the longer term. But I think it's better than for them to actually look at large cap companies. And if they are unable to take the risk directly on equities, then I think mutual funds would be the right, kind of option for them. So definitely it's a good time for investors to chip in, but yes, with a longer term time frame. अविनाश, शेयर बाजार में आज हमने जोरदार तेजी देखी। शुरुआत से ही हरे निशान को हम देखते रहे, और ये भी हम देख रहे हैं कि जो भी वर्ल्ड लेवल पर इकोनॉमिक न्यूज आ रही, जो भी खबरें आ रही हैं, अगर वो किसी दिन हमारे सेंसेक्स या बीएससी या एनएससी को नीचे लेकर के आते, रेड लाइन पर लेके आते, लेकिन जो छोटे स्टॉक्स है, कहीं ना कहीं उनकी भूमिका इतनी महत्वपूर्ण रही है कि उसे हरा बनाने में लगातार वो आगे बढ़ करके आए। यानी कि छोटे स्टॉक्स ने हमारे बाजार को काफी हद तक संभाले हुआ है। आप मानते हैं कि छोटे स्टॉक्स में निवेश करने का ये बिल्कुल सही समय हो सकता है? नहीं, बिल्कुल। देखिए, जैसे मैंने अभी मेरे पहले एक सवाल में कहा कि देखिए, छोटे मझोली कंपनीज में बहुत भरपूर तेजी देखने को मिली, क्योंकि ऑब्वियसली कॉर्पोरेट परफॉर्मेंस अच्छा है, इनकी रिलेटिव वैल्यूएशन बहुत से लार्ज कैप के मुकाबले में कम थी। यहाँ पे जो शेयर के प्राइसेस जो काफी अच्छी तरह से एप्रिशिएट हो गए, इसमें री रेटिंग का एक फैक्टर प्ले आउट हो चुका है। अभी भी काफी मौके बाजार में है, जैसे कि ऑटो कंपोनेंट्स, कैपिटल गुड्स, रियल एस्टेट, बिल्डिंग प्रोडक्ट्स, यहाँ पे मीडियम साइज छोटी कंपनियां अच्छे वैल्यूएशन पे मिली है, लेकिन यहाँ पे वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा होती है। तो ये बात इन्वेस्टर्स को ध्यान में रखनी चाहिए। जिनको वोलेटिलिटी की आदत नहीं है, जो वोलेटिलिटी अपने पोर्टफोलियो में नहीं रख सकते, उनके लिए डेफिनेटली ये खरीदने का मौका नहीं है। बट हाँ, जो थोड़े से हाई रिस्क वाले, हाई कॉन्ट्रा रिस्क लेने वाले जो इन्वेस्टर्स हैं, उनको डेफिनेटली इस माहौल का थोड़ा सा फायदा जरूर लेना चाहिए। लेकिन अगेन मैं यही कहूंगा कि थोड़ा सा सिलेक्टिव रहे। हर एक शेयर बढ़ेगा नहीं, बट हाँ, सिलेक्टिव कंपनी में अगर क्वालिटी बिजनेस है, प्रमोटर अच्छा है, तो डेफिनेटली अच्छे छोटे मझोली शेयर में आपको डेफिनेटली अच्छी तेजी आने वाले 6 से 12 महीने में कंटिन्यू करते हुए दिखाई देगी। आपको क्या लगता है कि किन खबरों के दम पर स्टॉक मार्केट में एक अच्छा एक्शन में देखने को मिल सकता है? ऐसी कौन सी खबरें हो सकती हैं जो हमें पॉजिटिव नोट पर ले जा सकती हैं? देखिए, पहली बात तो मैंने जैसे कहा कि 2 बड़े मैक्रो इवेंट्स इस हफ्ते प्ले आउट होने वाले। एक तो आरबीआई की पॉलिसी, दूसरा फेड की पॉलिसी। मैं समझता हूं कि ये 2 पॉलिसीज में अगर रेट पॉज आता है तो मार्केट को एक बहुत बड़ा बूस्टर शॉट मिलेगा, क्योंकि इंटरेस्ट सेंसिटिव सेक्टर जो है वहां पे आपको अच्छी बाइंग देखने को मिलेगी। मेरे ख्याल से जो रूरल ओरिएंटेड सेक्टर है वहां पे ऑलरेडी शेयर प्राइसेस बढ़े हैं, लेकिन मानसून कैसे प्ले आउट होता है वो आपको बहुत अच्छी तरह से देखना है। अगर मानसून नॉर्मल होता है तो मानसून एक बहुत बड़ा फैक्टर रहेगा अभी आने वाले हफ्तों में, कि वो किस तरह से अभी आएगा, कैसी उसकी स्पैटियल डिस्ट्रीब्यूशन होगी। तो मुझे लग रहा है कि मानसून और दूसरी बात ये फेड की पॉलिसी का इंटरेस्ट रेट डिसीजन और आरबीआई की पॉलिसी,
ये 2-3 चीजें मेरे ख्याल से काफी इंपॉर्टेंट रहेंगी, नॉट ओनली छोटे मझोली शेयर बट इवन लार्ज कैप स्टॉक्स को आने वाले हफ्ते 10 दिन के लिए जो उनका मोमेंटम है वो डिसाइड करेगा। आपने 2 चीजों का जिक्र किया, तीसरी चीज का जिक्र मैं करता हूं कि वर्ल्ड बैंक ने ग्लोबल ग्रोथ का अनुमान लगाया है और इसमें बढ़त का रुख दिखाया है, 1.7% से बढ़ा करके इसे 2.1% कर दिया। तो इसका असर हम देखने को पा सकते हैं हमारे अपने घरेलू शेयर बाजार में? नहीं, बिल्कुल। देखिए, एक्सपोर्ट डिमांड जो काफी समय से दबा हुआ था वो थोड़ा बहुत ग्लोबल वर्ल्ड ग्रोथ जीडीपी ग्रोथ का नंबर बढ़ता है तो डेफिनेटली इसका असर पॉजिटिवली प्ले होगा। हालांकि इसका नंबर में कॉन्क्रिटाइजेशन आने शायद आपको 3-6 महीने वेट करने पड़े, बट काफी ऐसे एक्सपोर्ट सेक्टर्स है जैसे कि फार्मा हो गया, ऑटो कंपोनेंट्स हो गया, यहाँ पे अभी हमको टेलविंड्स दिख रहे हैं। तो डेफिनेटली ये बात अच्छी है और हो सकता है कि इंडिया आने वाले साल में एक्सपोर्ट का भी जो मार्केट है वहां पे थोड़ी आउट परफॉर्मेंस दिखाने की क्षमता रखेगा। Avinashi, you spoke of a buoyant market, without doubt. Many people have also made profits, and I'm talking about the retail investor here. So if profit booking is happening, would you advise them, because, when the market is high, they would want to reinvest, and suppose they want to move from shares, which is like very volatile, as you said, you need a lot of study to go in, and it's not for the faint-hearted. If they want to move into mutual funds one time or into SIPs, do you think they should wait for the market to correct a little, or now is a good time? So I think it's always better to, buy on correction, although I believe that this is a buy on decline market. Even today, I would believe that, there is no need for any retail investors to hurry and, buy positions when the market touches, a record high. I would believe that, as liquidity comes in, there would be profit booking selectively, seen in the markets, and that would be a good time for retail investors to accumulate stocks. I think, it's a opportunity which investors should not miss out. But yes, at the same time, they should not get carried away by, very high valuations which are seen in some of the mid-cap and the small-cap companies. So I think it's a matter of time. Once the market also corrects, there could be a healthy correction. And at that point of time, investors should definitely not miss out that opportunity, according to me. अविनाश, अभी थोड़ा सा पीछे अगर जाकर के देखें तो कुछ आईपीओज रिलीज हुए थे। उन आईपीओज को अगर हम देखें तो काफी अच्छा परफॉर्मेंस उनका देखने को मिल रहा है और ये छोटे दायरे का भी ट्रेड है एक तरह से, बहुत बड़ा दायरा इसमें देखने को नहीं मिला, लेकिन एक ऐसा परिवर्तन इसमें देखने को मिला जिससे जो इन्वेस्टर्स है उसको काफी मजा आ रहा है। आपको लगता है कि अभी इस तरह की चीजें और देखने को मिलेंगी? नहीं, जरूर मिलेगी, लेकिन एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि देखिए, आईपीओ में जब भी कोई भी निवेशक को 100% गेन 3-4 दिनों में मिलता है तो समझदारी यही है कि थोड़ा सा मुनाफा वसूल करे। काफी अच्छे आईपीओ मार्केट में उतर रहे हैं और मेरे ख्याल से आपको अगर अलॉटमेंट मिल गया तो आईपीओ में पैसा बन सकता है, लेकिन आईपीओ का मार्केट सेंटीमेंट के ऊपर चलता है। जैसे ही सेंटीमेंट खराब हो जाएगा तभी आपको यहाँ पे बिकवाली का प्रेशर भी देखने को मिलेगा। मेरे ख्याल से सिलेक्टिवली इन्वेस्टमेंट करें, लेकिन लिस्टिंग गेन्स हर बार आएगी इसकी कोई गारंटी नहीं, लेकिन हाँ, जो सिलेक्टिव आईपीओ अभी तक आ गए हैं प्लस बाजार में अभी जो खुले हैं इसमें निवेश आप कर सकते हो, प्रोवाइडेड आपका नजरिया थोड़ा सा मीडियम टू लॉन्ग टर्म है, क्योंकि देखिए लिस्टिंग गेन्स का गारंटी और कोई परफॉर्मेंस हम दे नहीं सकते। बट हाँ, माहौल अभी फिलहाल आईपीओ के लिए अच्छा है क्योंकि पैसा काफी जोरों से इंस्टीट्यूशन, एचएनआईज, पीएमएस, रिटेल इन्वेस्टर सभी लोग इसमें अप्लाई कर रहे हैं, तो एपिटाइट अच्छा है, तो डेफिनेटली ये सारे आईपीओ में अच्छा पैसा बनने की उम्मीद रहेगी। फार्मा सेक्टर के लिए आप क्या बोलेंगे? देखिए, फार्मा सेक्टर में 2 चीजें हो रही है। एक तो चाइना फैक्टर अभी इंडिया के तरफ मुड़ रहा है, प्लस हो रहा है, और इसका एकमात्र कारण है कि जो एपीआईज इंडिया में कंपनीज बनाती है, जैसे कि रॉ मटेरियल होता है, हमने देखा है कि बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस Q4 यानी मार्च क्वार्टर के लिए काफी इंडियन कंपनीज ने दिखाई है, और ये ट्रेंड कंपनी के मैनेजमेंट का अनुमान है कि अगले 3-4 क्वार्टर्स के लिए चलेगा। जो कीमतें काफी घटी थी अभी वहां पे भी प्राइसेस बढ़ रही है, तो मैं समझता हूँ कि फार्मा में जिनको निवेश करना है वो जैसे कि ड्रग्स हो गया, करेंसीज हो गई, आरती इंडस्ट्रीज हो गई, ये सारी बिजनेसेस में हमको लग रहा है अच्छी ट्रैक्शन देखने को मिलेगी। हालांकि देखिए, जो फॉर्मुलेशन प्लेयर्स है वहां पे भी ग्रोथ पोटेंशियल काफी अच्छा है, जैसे कि लुपिन है, सन फार्मा है, टोरेंट फार्मा है, बट ये थोड़ा सा लंबा नजरिए से ही आपको करना पड़ेगा। Doing a zoom out now, when we see the larger economic conditions within the country, we also know that nearly 4,000 companies have declared their results in the last quarter of the financial year 2023, and they're clearly indicating that profitability is under pressure as companies are grappling with higher input costs and higher interest rates. But industry bodies, of course, are very optimistic, saying that the worst is over and that the slowing of consumption and inflation, which were actually drag factors, are likely to get minimized. What would be your take on this? Can you please repeat the question, please? There was some disturbance. Right.
So we are looking that a lot of companies have declared their last quarter financial year 23. They have indicated their profits, and it is showing that profitability is under pressure of higher input costs and interest rates. But industry bodies are optimistic. They are also saying that the worst is over. The slowing of consumption, inflation, which were drag factors, are likely to get minimized now. What would be your take on this? No, I think, frankly, macro numbers, if you look at the GDP data which came out, and if you see the GST collections, I think numbers have been pretty robust, and that gives a clear indication that on-ground demand conditions have actually improved significantly. Rural demand is also picking up, so we could see a lot of traction in sectors like FMCG, agrochemicals, as well as fertilizer. So my sense is that yes, there is input cost pressure due to rising inflation. I think since the demand is good, we are seeing a lot of good growth in sectors like automotives, capital goods, real estate. In fact, real estate companies are reporting better numbers and showing higher inventory sales despite higher rising interest rates. So nevertheless, our sense is that, you've got to keep a very selective approach on 1 or 2 quarter performances, may be volatile, but the roadmap clearly shows that Indian corporate sector is going to do well. And I think earnings growth, is going to be fourth quarter corporate. I'm sorry, Avinash. I think the last few lines were cut off. If you could just repeat after the corporate sector being on a growth path. We lost your conversation there. Hello? I think there's a connectivity issue. We'll come back for our conversation with Avinash ji. Meanwhile, we move on to our next story, which is about the rupee. जी हाँ, रुपए पर नजर डालें तो अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज 6 पैसे की बढ़त के साथ डॉलर के मुकाबले 82 रुपए 54 पैसे प्रति डॉलर के स्तर पर बंद हुआ। 6 अन्य प्रमुख मुद्राओं की तुलना में डॉलर की मजबूती मापने वाला डॉलर इंडेक्स दिन के कारोबार में 103.88 पर कारोबार कर रहा था। और एशियाई शेयर बाजारों पे हम नजर डालें तो इस महीने फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दर में वृद्धि के ठहराव की संभावना के विपरीत बाजार में अस्त व्यस्त आर्थिक स्थिति की भविष्यवाणी के रूप में इसे देखा जा रहा है और इसी कारण आज अधिकांश एशियाई शेयर बाजारों में मिला जुला रुख देखा गया। पिछले साल अप्रैल के बाद से देश के व्यापार अधिशेष से सबसे निचले स्तर पर पहुंचने के आंकड़ों के बावजूद चीन का शंघाई कंपोजिट सूचकांक निर्यात में तेजी से गिरावट से पीड़ित रहा और हांगकांग के हिंगसेंग में आज 0.8% की वृद्धि दर्ज की गई। चीन का शंघाई कंपोजिट सूचकांक 0.08% ऊपर आ गया। वहीं जापान का निक्केई सूचकांक 1.9% नीचे आ गया। सिंगापुर के स्ट्रेट्स टाइम सूचकांक में 0.3% की गिरावट हुई। दक्षिण कोरिया के कॉस्पी में सपाट कारोबार हुआ। यूरोपीय शेयर बाजार की हम बात करें तो यहां दिन के कारोबार में सकारात्मक रुख देखा गया। फ्रांस के कैक और जर्मनी के डेक्स दोनों 0.4% ऊपर आ गए और लंदन का फुट्सी 100 0.12% बढ़त में रहकर कारोबार कर रहा था। Avinash is back on the line, but before we come back to you, Avinash ji, thank you for joining us again. A quick look at the U.S. market. U.S. stocks ended up yesterday, backed by some advances in economically sensitive sectors as investors awaited inflation data and the Federal Reserve's policy meet next week. The Nasdaq Composite Index rose 3.6%, the S&P 500 accelerated 0.24%, and the Dow Jones Industrial Average ended flat. Avinash, are you with us right now? Yeah, I'm connected. Wonderful. So wanting to now draw your attention, and you did earlier speak about the Fed meet and what their announcement will be. Wanting to take a global perspective, we just spoke about, while we were reconnecting to you, about the global markets and how they have moved. Do you think that, all global markets are now more interconnected at the hip, or do domestic factors also are taking, like India has a strong domestic factor influence? What about the other markets? No, I think broader markets are expected to do well. See, the global markets still continue to be challenging. There are several headwinds from US and Europe. And I think until now, I think we believe that at least for the next 3 to 6 months, the global economy is definitely showing some signs of good revival, especially the US market where employment data, the job data has been much better than street expectations. But I think the big challenge is inflation. Inflation is at a record high in the US market. So my sense is that, it might take at least another 3 to 4 months or 6 months before we see inflation peaking out.
As far as Indian markets are concerned, I think we are in a scenario where growth is looking very strong. As everyone knows, the quarter 4 GDP number has been significantly high. The fiscal deficit number has come down. Corporate performances is good. So the broader markets will follow data points, coming in now, from basically what kind of interest rate adjustments happen both from the central banks in India as well as US. And most importantly, how the monsoon factor plays out. If the monsoon factor does not play out properly, and if there is any negative surprise, then I think we could expect a little weakness in the markets going forward. Right. All that would get cleared in the next couple of weeks when the IMD presents its final report. Right. अविनाश, आज केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बीएसएनएल के लिए 89,047 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय के साथ तीसरे पुनरुद्धार पैकेज की मंजूरी दी है। एक पॉजिटिव खबर आई है जो कहीं न कहीं हमारे जो टेलीकॉम सेक्टर है उसको प्रभावित करेगी। तो किस तरह का असर आपको देखने को नजर आ रहा है कि किस तरह के परिवर्तन हम देख सकते हैं, खासतौर पर एक इन्वेस्टर की नजर से अगर हम देखें तो? देखिए, इसका जो असर है, ये जो 75-80 हजार करोड़ का जो आउटले बीएसएनएल को गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है, इससे काफी टेलीकॉम कंपनीज को, आईटी कंपनीज को फायदा होगा, क्योंकि काफी नए ऑर्डर्स और कई नई जो स्पेंडिंग जो बीएसएनएल करेगा, इसका बेनिफिट गेन इन सारी सेक्टर की कंपनीज को मिलेगा। ओवरऑल गवर्नमेंट ने कोशिश की है कि टेलीकॉम सेक्टर में वो अपनी कोशिश से बीएसएनएल को ये फंडिंग दे दे ताकि उनके एक्सपेंशन प्लान में कोई रुकावट न आए। लेकिन मुझे लग रहा है कि यहाँ पे आईटी कंपनियां जैसे टीसीएस है, इन्फोसिस है, उसके बाद टेलीकॉम कंपनीज में जैसे भारती एयरटेल है, उसके बाद स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज है, जो बेसिकली ऑप्टिक केबल बनाते हैं। हमको लग रहा है कि यहाँ पे आपको अच्छे इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, क्योंकि जब भी कैपेक्स स्पेंड होता है तभी कहीं ना कहीं डिमांड आती है और ऑब्वियसली इन ऐसे कंपनीज का फायदा होता है। तो लॉन्गर टर्म में मुझे लग रहा है कि टेलीकॉम सेक्टर तो बढ़ेगा ही, बट ऐसे जो एंसिलरी कंपनीज है जो टेलीकॉम सेक्टर में बहुत बड़ा एक्सपोजर रखती है, वहां पे डेफिनेटली फायदा होना चाहिए। और श्रोताओं, आपको बता दें कि इस फैसले के बाद जो इक्विटी इन्फ्यूजन के जरिए बीएसएनएल के लिए 4G और 5G स्पेक्ट्रम का आवंटन भी इसमें शामिल किया गया। बीएसएनएल की अधिकृत पूंजी 1,50,000 करोड़ रुपए से बढ़कर 2,10,000 करोड़ रुपए की हो जाएगी। इस पुनरुद्धार पैकेज के साथ बीएसएनएल एक मजबूत दूरसंचार सेवा प्रदाता के रूप में उभरेगा, जो देश के दूर दराज के क्षेत्रों के साथ संपर्क पर केंद्रित होगा। इस स्पेक्ट्रम आवंटन के साथ ही बीएसएनएल पूरे भारत में 4G और 5G सेवाएं प्रदान करने में सक्षम हो जाएगा और विभिन्न संपर्क परियोजनाओं के तहत ये ग्रामीण तथा इस सुविधा से वंचित गांवों में 4G कवरेज भी प्रदान करेगा। ये हाई स्पीड इंटरनेट के लिए फिक्स्ड वायरलेस एक्सेस सेवाएं और कैप्टिव नॉन पब्लिक नेटवर्क के लिए सेवाएं तथा स्पेक्ट्रम प्रदान करेगा। सरकार ने बीएसएनएल और एमटीएनएल के लिए पहले पुनरुद्धार पैकेज को 2019 में स्वीकृति दी थी। 69,000 करोड़ रुपए के इस पैकेज से बीएसएनएल और एमटीएनएल को मजबूत करने में मदद मिली थी। वर्ष 2022 में 1,64,000 करोड़ रुपए के दूसरे पैकेज को स्वीकृति दी गई। दोनों पैकेजों के परिणाम स्वरूप बीएसएनएल ने परिचालन लाभ कमाना शुरू कर दिया और इसका कुल कर्ज 32,944 करोड़ रुपए से घटकर 22,289 करोड़ रुपए रह गया है। Moving on to our next story, the Cabinet Committee on Economic Affairs today approved an increase in the minimum support price MSPs of all mandated Kharif crops for the marketing season of 2023-24. The Cabinet has taken this decision to ensure remunerative prices to growers for their produce and to encourage crop diversification. Briefing the media in New Delhi this afternoon, Union Minister Piyush Goyal said this year's increased MSP is the biggest in the last several years. The increase in MSP for Kharif crops for marketing season 23-24 is in line with the Union Budget 2018-2019 announcement of fixing the MSP at a level of at least 1.5 times of the all India weighted average cost of production, aimed at a reasonably fair remuneration for all farmers. As per the third advance estimates for 2022-23, total food grain production in the country is estimated at a record of 330.5 million tons, which is higher by 14.9 million tons as compared to the previous year, 2021-22. This is the highest increase in the last 5 years. Avinash, your feeling and your response to the fixing of these MSPs. So great encouragement, of course, good news for the farmers. How do you see this helping food security within the country and in terms of employment generation? Hello, Avinash-ji. Hello, can you please repeat the question? Yes, please. I will do that. So we have these MSP figures which have come out of the cabinet decision today, and wanting to understand from you,
what will be the impact? So we earlier spoke of, this is good news for the farmers. What is the impact going to be on the food security situation? It's also a global issue. A lot of people are planning, and its effect on diversification. Will this encourage diversification of crops, which the government aims to do? So I think it definitely is a good decision that the government wants to support the farmers. But I think my sense is that, in this perspective, the monsoon factor is very important. We have been hearing that, factor might play out. So I think that is now going to be a very crucial kind of subject. And I think in the next coming few weeks, hopefully if this passes through, then I think, food inflation, which is a major kind of input of the overall inflation basket, could see easing off, and that is definitely a good sign. My sense is that over the next 1 or 2 months, we could see inflation peaking out completely, and the pause cycle would now continue, and I think interest rates would now be a talk of the, behind. So definitely I think it's better to wait for at least maybe another month or so before we can say that all these initiatives by the government, which the government has taken for agriculture prices, for farming, for support prices, all that will take some time. So it's better to wait for some time before we could get some concretization of numbers, which possibly the markets will also discount accordingly. Right. We move on to oil prices now. Oil prices rose today after the previous session's losses as demand concerns owing to slow global economic growth were offset by fears of tighter global supply following Saudi Arabia's pledge to deepen output cuts. Saudi Arabia, the world's top oil exporter, will make production cuts of 1 million barrels per day starting from next month as a part of a broader output limiting OPEC Plus deal due to flagging oil prices and a looming supply crunch. In intraday trade, Brent crude was trading at $77.04 a barrel. West Texas Intermediate crude price was at $72.49 per barrel when reports last came in. और अब गोल्ड पर नजर डालते हैं। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में आज अगस्त के वायदा कारोबार वाले सोने के भाव में 142 रुपए की गिरावट आई और ये 59,843 रुपए प्रति 10 ग्राम पर था। अंतिम समाचार मिलने तक जुलाई अनुबंध वाली चांदी 44 रुपए की वृद्धि के साथ 72,000 रुपए प्रति किलोग्राम पर थी। वैश्विक बाजारों की हम बात करें तो न्यूयॉर्क मर्केंटाइल एक्सचेंज में सोना बढ़त के साथ $1,977.70 प्रति औंस पर कारोबार कर रहा था। चांदी भी तेजी दर्ज करते हुए $23.70 प्रति औंस के आसपास कारोबार कर रही थी। अविनाश, एक प्रश्न आपसे पूछना चाहता हूं। ग्लोबल एक्सचेंज में कॉपर की गिरती हुई इन्वेंट्री की रिपोर्ट्स आ रही हैं, ये इस मौके को किस तरह से देखना चाहिए? नहीं, बिल्कुल देखिए, कॉपर के प्राइसेस में कटौती देखने को मिली है और इन्वेंट्री अगर कम होती है तो डेफिनेटली जो कॉपर के प्लेयर्स है इनको डेफिनेटली थोड़ा बहुत रिलीफ मिलेगा। बट इन द नियर टर्म जो कॉपर कंज्यूमिंग सेक्टर है जैसे टेलीकॉम केबल्स हो गया, उसके बाद इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट हो गया, इनके लिए अच्छी बात है क्योंकि इमीडिएटली कॉपर के प्राइसेस में हमको नहीं लग रहा है कोई बड़ा उछाल आएगा। जी, इन्वेंट्री जो है इसको खत्म होने के लिए हो सकता है कि आपको और 2-3 महीना वेट करना पड़े और उसके बाद हो सकता है कि कॉपर के जो प्लेयर्स है जैसे इंडिया में हिंदुस्तान कॉपर है वहां पे अच्छा पॉजिटिव इजाफा आपको देखने को मिले। कॉपर डेफिनेटली आने वाले 2-3 महीनों के लिए यही रेंज में रहेगा, ऐसा हमारा अनुमान है। इसमें चीन के मई महीने के ट्रेड डेटा का इंतजार अभी हमारे पास, मतलब ये हमें पूरे डेटा मिल नहीं पाए हैं, तो उसका भी कुछ असर पड़ेगा? नहीं, बिल्कुल उसका भी असर पड़ेगा, लेकिन मेरे ख्याल से कमोडिटी के जो प्राइसेस होते हैं ग्लोबली, जो मेटल एलएमई प्राइसेस पे जो भाव आपको दिखाई देते हैं वहां से पहले सिग्नल मिलता है। तो जो जैसे आपने कहा कि इन्वेंट्री अगर मार्केट में कम हो रही है और डिमांड बढ़ रही है तो उसका मतलब आने वाले जून जुलाई बाद यहाँ पे थोड़ी सी अपटिक कॉपर के प्राइसेस में आपको देखने को मिल सकती है। Avinash, a quick response to oil prices. We are looking at cuts. Is there anything to worry about? Because, oil prices, good for most economies, are falling. Yeah, I think my guess is oil prices are going to be, looking at the fact that, Saudi Arabia has cut output, plus China reducing its oil consumption. I think in the very near term, we are not going to see a very large kind of volatility in the oil price. In fact, oil prices are unlikely to, trade significantly at a premium. Right. Thank you, Avinash, for coming on to our program. And now, before we close, a reminder of the headlines. Key domestic indices end on a strong note. Sensex finishes above 63,000 points. Nifty crosses 18,700 level. Cabinet approves increased MSP for Kharif crops. And rupee closes at 82 rupees and 54 paise against the US dollar. And that's it in this edition of Market Mantra. Namaskar. Market Mantra.